Okay, so hello everybody, good morning and welcome to the EduphoreIAS, the live Hindu class analysis, the live Hindu analysis class. And today, as usual, we first start with yesterday's questions and then we'll be starting with the today's editorial or today's newspaper discussion. Fine. So quickly have a look at the yesterday's questions. First is India cannot afford to be among those who may want to scramble for outer space hegemonies over what is not just the common heritage of humankind but that of a larger cosmos. We need to comment for this question in 250 words and for 15 marks. Okay, so yesterday we discussed an article on the lead, this article on the editorial page itself written by Gopal Krishna Gandhi ji, and of course the title was, the article was taking a giant leap for new ethics in outer space. And this was based on somewhat the discussion, firstly this was this ethics for, new ethics for outer space or in outer space somewhat was based on, the Antarctic Treaty, you can say, fine, where we discussed yesterday that how initially the Britain and Norway began this expedition in this Antarctic region or the South Pole of the Earth, and over the time we have seen that number of countries keeps on increasing, and today somewhat there are around 54, 55 in fact there are research stations among 12 countries. And apart from that, there are around 54 parties are there, out of which 29 having the consultative status, including India. And even India has this two of, currently which are under operation. So two operational bases, research bases, that is Mathuri and Bharati, currently working in the Antarctica. Fine. So we have seen that how over the time, when this USSR and Chile supported the Argentine proposal, where Argentina came up with a proposal that Antarctic should not be used as a ground for testing the nuclear bombs or so, and later on the US even agrees to this. So how this all things ultimately led to a peaceful treaty, you can say, or an ethics which kept the Antarctica or the South Pole of the Earth somewhat peaceful. And of course, so similar kind of the writer talked about the similar kind of ethics or treaty or cooperation between the countries required for the outer space as well, in the outer space as well. And that's why he said that we need a new ethics, because outer space, of course, everybody, be in India, be it Russia, everybody now, every countries, even the private players are competing in outer space, and of course this is somewhat apprehensive that in coming times it might be that this outer space is going to be militarized, isn't it? So that's why in this backdrop, this was the article he actually wrote. And of course the question so followed is the same structure that we need to follow for this question as well, and that is IBC, intro, body and conclusion. Fine. So first intro, 4 to 5 lines max, since it is a question for 15 marks. Fine. So 4-5 lines max, you can say around somewhat 40 words, 40-45 words. So you can start, of course, that how you can say the one way to start this introduction for this question is, of course, going back in the past, that somewhat you can say that the urge to plant one's flag somewhat there before other flag bearers does is a human, that's natural, human inclination. It is a part of humans political instinct rather, कि एक दूसरे से आगे रहना है, compete करना है. And somewhat you can say that some 11 decades ago in 1910-12 both itch and urge were quivering in northern hemisphere. Fine. And of course there are two persons mentioned, so आप उनको mention कर भी सकते हो, नहीं भी, it's not that big deal, you can mention the countries itself. Fine. Now next is setting foot on the South Pole. So of course South Pole, यहाँ पे मून की साउथ पोल की बात नहीं हो रही है, अर्थ की साउथ पोल की बात हो रही है. सो ऑफ कोर्स अंटार्कटिक की बात कर रहे हैं हम, द सदर्न ओशन एंड ऑल कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट. सो देयरफॉर यहाँ पे भी फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने यही मेंशन किया हाउ द टू कंट्रीज इनिशियली initiated this expedition of Antarctica or the South Pole initially, that is Britain and of course the Norway, and later on
how these countries keeps on increasing, like for example from 2 to later on become the 7 and then 12 and then so on. So ultimately regulation and Antarctic's well-being treaty and all that we have discussed, so this should form the part of your one by one. For example, setting foot on the South Pole, this could be the one headings of your answer. Then second could be regulation and Antarctic's well-being, the second heading. Then the third heading could be an agreement that is about restraint, fine, keeping in mind the outer space, fine, that we need a similar kind of treaty that we actually concluded with respect to the Antarctica, the South Pole of the Earth, and it has been quite successful as well. And this is how under 3 headings you can mention at max, let us say 6 points, 8 points somewhat, because this question is a 15 marker. And after that, in the end, you can somewhat, of course, conclude that the Outer Space Treaty and the Moon Agreement now need aligning not just with the latest advance in space missions, but with a moral compass to the stars. And India, therefore, cannot afford to be among those who may want to scramble for outer space hegemonies over what is not just the common heritage of humankind, but that of a larger cosmos. Fine. So this is how you can conclude the same. Fine. So this should be the structure of your answer. Second question was related to, of course, the delimitation coming, because lots of things, this discussion going on around your this. Finally, yesterday the Rajya Sabha has passed the reservation bill for the women, that is 33% of the now the seats would be reserved, but that would come into effect from the 29th 2029 general elections, Lok Sabha elections. So but before that we need to delimit the constituencies, fine, alongside that and that would be based on the, of course, the census data. So that's why this was a question. Delimitation means the act or process of fixing limits on boundaries of territorial constituency in a country or a province having a legislative body. Indeed, this is correct. Delimitation commission, जो commission है which takes this care of this delimitation exercise, that is called delimitation commission. It is, of course, constitutional body mentioned in this constitution article itself. So it is appointed for the purpose of delimitation by the Prime Minister of India. No, this is wrong. This is appointed by, since a constitutional body, appointed by the President of India and not the Prime Minister. So that's why this is second is incorrect. So which one is incorrect option? Of course, the second one. First is correct. So correct option is B for this question. Fine. Let us now start our discussion. Of course, the today's Hindu is itself the 22nd of September today, and we are starting from the front page first. So you see, women's quota bill cleared in Rajya Sabha as all members vote in support. So in Lok Sabha, I think not all members mentioned, but rather the voting was somewhere around 456 or 454. Fine, कि 543 सीट्स हैं, उसमें से कुछ vacant भी हो सकती हैं. So of course, total जो voting हुई थी लोक सभा में, that was around 454, means not one absolute one, because not all members voted in favor, but in Rajya Sabha we have seen that all members vote in support. So that's something good. ठीक है. This was 128th amendment bill. पिछले 2-3 दिन से हम यही बात कर रहे हैं, और इसका नाम क्या है? That is the नारी शक्ति वंदन अधिनियम. ठीक है. Fine. So all 214 members हैं, वैसे तो 245 की बात होती है, 250 somewhere, but 238 plus 12, 245. So 250, 238 plus 12, 250 total जो strength है राज्यसभा की. But of course n number of reasons, vacations, vacant seats हो सकती है, या members पूरे नहीं है. So of course 214 जो थे वो members present थे कल. So present and voting जितने भी थे सबने इसको favor में vote किया. ठीक है. So that's a very good thing. मणिपुर 50 hurt as women throng police stations. मणिपुर में अभी शांत माहौल नहीं देखने को मिल रहा है. इम्फाल में खास करके हमें कुछ कल दिक्कतें देखने को मिली थी. Then China, US and India absent at the climate summit, United Nations climate ambition summit जो न्यूयॉर्क में चल रहा है. एंड इसी climate action this ambition summit से रिलेटेड UPSC ने मेरे ख्याल से 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था. ठीक है. वीजा सर्विसेज पोस्ट अमिट कनाडा टसल. सो पिछले 2-3 दिन से कनाडा के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एंड उसके निजर के पर्सन कॉल्ड निजर. सो आफ्टर द this shot dead, he was shot dead in Canada itself. So after that, Canadian Prime Minister said something which didn't well with the Indian establishment, and therefore these are the situations currently. And even we have suspended the visa, this issuing of visas and all.
ठीक, उसके बाद पंबन ब्रिज वर्क डिलेड तमिलनाडु, and ISRO to switch on Vikram Pragyan again, of course, after being switched off for around a fortnight. Now again this would be switched on because of the dawn of the sunrise, of course, sun at the south pole of the moon. Somewhat we need this sunlight in order to keep this mission going, or to keep them, because we have solar panels attached to these Vikram landers, of course the lander, therefore that sunlight is required for so this is related to somewhat you have this related to, of course, okay, city page from Delhi, so not that important. जो दिल्ली से हो जरूर इसको देख लेंगे, otherwise rest can escape. Next, of course, the states page. So you can see India's suspension of visa services in Canada creates panic in Punjab. Of course, majority of the population in Punjab, you can see, especially in Canada, are from Indian origin. Of course, that's Punjabis. So CM Chauhan, you can see in Madhya Pradesh. This is again important news. Unveils the statue of oneness in Omkareshwar, that is in Khandwa district of Madhya Pradesh. ठीक है, so it's a gigantic statue of Adi Guru Shankaracharya. ठीक was he was a this 8th century mystic saint, Indian philosopher and theologian. This statue is of 8 feet tall, portrays the 8th century Indian philosopher and theologian who consolidated the doctrine of Advaita Vedanta. ठीक है, monotheism, Advaita Vedanta. The unveiling is part of ambitious Ekatma Dham project of the state government and marks the initiation of first phase. Okay, so this is a part of Ekatma Dham project. बस इतना कुछ खास नहीं, हमारे को यहाँ से पता होना चाहिए कि कितने फिट की स्टैचू है, कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, एंड नेम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, लाइक स्टैचू ऑफ यूनिटी, सो स्टैचू ऑफ वननेस वी हैव हियर. तो आपको बस लोकेशन पता हो, ठीक है, एंड किससे रिलेटेड है, तो शंकराचार्य जी से रिलेटेड है. एंड शंकराचार्य की अगर बात हो रही है तो उनकी फिलोसफी क्या थी, ठीक है, whether this was Advaita, Dvaita or Vishishta Advaita. So there's different philosophy because we have Shankaracharya, we have Ramanujacharya. So of course there are different acharyas and different philosophies. तो बस इतना हमें पता हो क्योंकि एग्जाम के लिए रेलिवेंट है. ओके, आधार नॉट मैंडेटरी फॉर एंट्री लेवल एडमिशंस इन प्राइवेट स्कूल्स, ऐसा कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने. ठीक है, so nomination of Pramila Malik as Odisha's first women speaker is not just a symbolic gesture. So Odisha की first कोई women speaker बनी है, name is Pramila Malik. Nomination हुई है अभी तो. ठीक है, again the states page you can see Kaveri water row Karnataka may await for next CWMA meet, and Supreme Court ने has refused finally to say anything to the CW or intervene in the management of or working of CWMA based on Karnataka's request. ठीक है, न्यू पंबन ब्रिज में मिस इट्स नवंबर डेडलाइन. सो टारगेट ये था कि ये नवंबर तक कंप्लीट हो जाए, बट पंबन ब्रिज है कहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए. इट इज बीइंग बिल्ट टू कनेक्ट Mandapam town on the mainland with Rameshwaram on the Pamban Island in Tamil Nadu. So Pamban Island कहाँ है ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि पता हो. ठीक है, तो राम सेतु की जब हम बात करते थे तो पम्बन ब्रिज, उसको पम्बन ब्रिज भी बोला जाता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, okay. So finally, this is the editorial page, and both the articles on this page today are important. And of course, the first one is related to the development, the propelling India's development the right way. Okay, so of course, it's from economics related article, and you see that somewhat इसमें पूरे में राइटर ने बात क्या किया है. So इस पूरे आर्टिकल में ये कहा है राइटर ने कि जहाँ तक बात है कि जो इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी रही है सिंस बिगिनिंग,
वो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि फेलियर रही, हमारे 5 ईयर प्लान्स जो थे वो फेल थे, बट कहीं ना कहीं इनिशियली जो रोल ऑफ स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसको लीड लेनी पड़ती है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर एक सिंपल सा फंडा है कि वो जब तक उनको प्रॉफिट मोटिव नहीं दिखता है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं है, आई मीन इनिशियली जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट को ही आगे आकर के लीड लेना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स इसको सारा कुछ इन्होंने किया, एंड फिर इन्होंने काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड यहाँ दिया है कि अल्टीमेटली यू कैन सी कि इन्होंने रिलेट किया इस आर्टिकल को with the Chandrayaan 3 mission, success of this Chandrayaan 3 mission, and he is saying is somewhat when India started space research in the 1960s, many thought it was being a reckless, struggling young nation sinking some of the limited resources in a highly uncertain enterprise. Today, however, even the last of the naysayers must be convinced. In a matter of few days, India became the first nation to land a rover on the south pole of the moon, near South Pole, remember, not exactly the South Pole, followed up with a mission to study the sun, that is Aditya L1. Yet this is also the moment to revisit a nagging concern. And what is that nagging concern? That how do such a stellar achievements stand alongside the persistence of poverty and destitution for millions of Indians? Yes, so this is a nagging question that we need to address or discuss about. Fine. So he is now giving the background, saying that somewhat even before, remember the ISRO was established in the year 1969. Fine. In the same 1969, we had around 20 of 19 exactly. Then banks were nationalized. Fine. So in the 1969, when ISRO was set up, it wasn't like the space research actually started with the establishment or setting up of this ISRO. But before even that, space research was going on in India, and that was led by, of course, the Department of Atomic Energy, which comes directly under the Prime Minister. Okay? Department of Atomic Energy, which itself had been founded in the early 1950s. These were certainly not isolated initiatives. Between 1951 and 61, India established 5 Indian institutes of technology, which in no time grew into globally respected academic centers. So India ने 1951 से 61 10 सालों के बीच में क्या 5 टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश की, सेटअप की, जो कि आज अपने आप में काफ़ी फेमस हैं वर्ल्ड ग्लोबली एज वेल. So the first even 2 Indian institutes of management were inaugurated in 1961. So during the 2 decades of 1950s and 60s, a number of public sector units were established in diverse areas of industrial production that included steel, fertilizer, machine tools, HMT, Hindustan Machine Tools, electric machinery, drug production and petrochemicals. So in sectors में investment की गई सरकार के द्वारा in these 2 decades, 50s to 60s. So technology to remedy underdevelopment. तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जैसे अगर इकोनॉमिक्स का थोड़ा बैकग्राउंड ले लें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हैरोडोमार मॉडल, सेकंड वाज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट का हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी है दैट वुड बी इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. फाइन, कि गवर्नमेंट की रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी की काफ़ी इंपॉर्टेंस रखी गई, सेंटर में रखा गया टेक्नोलॉजी. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज taken together, these public investments show that India was determined to become a serious player in this field in advanced technology of the time, despite the multiple challenges facing the young nation. So new technologies, it was believed that time would quicken the pace of development of the country, which had suffered from 2 centuries of colonialism. And Vikram Sarabhai, the leader of India's space program, had envisioned, this was in the early 1960s, that satellites could be used for building a nationwide telephone system and for providing agriculture and health education. So Vikram Sarabhai, the founding father or the father of space, this you can say development in India, somewhat research and development, especially Indian space program के जनक थे. तो इस देख सकते हो कि 1960s में इन्होंने कह दिया था कि सैटेलाइट के थ्रू हम कहीं ना कहीं नेशन वाइड टेलीफोन की जो सिस्टम है या वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विसेज, प्लस एग्रीकल्चर एंड हेल्थ एजुकेशन को भी हम provide कर सकते हैं with the help of technologies. So somewhat you can say that in fact the momentous step India had taken in the decades immediately after independence may be characterized as the moonshot approach to development, deploying modern industrialization to shake off the ills of the past. However, India's moonshot development strategy was only partially successful and it has also been the subject of much criticism from certain quarters. ठीक है,
One was, first criticism was for its heavy investment, especially you can say, और heavy reliance on public investment. ठीक है कि इनिशियली जैसे मैंने कहा कि जब तक प्राइवेट की प्लेयर्स की एक ये होती है कि जब तक प्रॉफिट के चांसेस ना देखें, ब्राइट चांसेस ना हो, तब तक वो नहीं आते, इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करते. तो ऑफ कोर्स इनिशियली किसी भी देश में कहीं भी सरकार को आगे आना पड़ता है, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. सेकेंड क्रिटिसिज्म, इन्वेस्टमेंट्स वर बीइंग मिसडायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट. Being a labor surplus country, they argue India should have stuck to its comparative advantage. Comparative advantage एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है कॉन्सेप्ट है. उसमें ये है कि जिस कंट्री को जो चीज बेटर प्रोड्यूस कर सकती है उसको प्रोड्यूस करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया एक लेबर सरप्लस कंट्री है तो टेक्सटाइल अच्छा में प्रोड्यूस कर सकती है. जहां में भी लेबर की इन्वॉल्वमेंट, यहाँ जिस भी सेक्टर में लेबर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है या लेबर एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कंपैरेटिव एडवांटेज अमेरिका से ज्यादा बेटर इंडिया में, क्योंकि सरप्लस लेबर है. ठीक है, हाँ अगर कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसको यूएस प्रोड्यूस करे, एंड इस तरीके से इंडिया एंड अमेरिका के बीच में ट्रेड हो सकता है इन कंपैरेटिव टर्म्स. ठीक है कि जिसमें भी जिसके स्पेशलाइजेशन है उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे. तो कंपैरेटिव एडवांटेज इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज सच एज गारमेंट्स और फुटवियर रादर देन स्क्वैंडरिंग द कंट्रीज स्कार्स सेविंग्स इन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, जैसा कि हमारा फोकस रहा है इनिशियल 5 ईयर प्लान्स में. But of course, the time needed for a new technology to come to fruition is too long, and the initial effort required is too steep that it is unlikely to expect a private player to lead the moves to acquire it. Yes, this is what I said कि initially gestation period बहुत होता है, profit chances कम होते हैं, तो private players जल्दी नहीं आते. So in India, the technological capabilities built through state support provided the base for the flourishing of private enterprises in many sectors, including pharma, information, tech, space sector too. And professionals who were earlier trained in India's public universities have found leadership positions globally, which has deepened India's strategic importance. Of course, all of this has somewhat deepened India's strategic, importance. Plus, earlier he is saying कि जैसे हमने initially invest किया टेक्नोलॉजी के डोमेन में, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा हमें आगे चल के देखने को मिला, बिकॉज बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें इससे फायदा हुआ. Inequality is a hurdle for progress, but issue क्या है? The biggest issue is of course the inequalities. क्यों कि हुआ क्या कि the lackluster record for India's development strategy then was not on account of the government doing too much in the area of technology building, but on the contrary, it was because the state or the government could not intervene effectively to reduce inequalities or ensure social development. So इशू कहाँ है कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं, इशू ये नहीं था कि टेक्नोलॉजी में आपने इन्वेस्ट किया है, इस लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की, दैट वाज नॉट एन इशू, बट द रियल इशू वाज कि स्टेट या गवर्नमेंट ने यहाँ पे साइमल्टेनियसली यूज करने कुड नॉट इंटरवीन इफेक्टिवली टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज और इंश्योर सोशल डेवलपमेंट. ठीक है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है या इनइक्वालिटीज रिड्यूस करने की जहां तक बात है, सरकार ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया. फॉर द डाउन ट्रोडन, disadvantages due to the lack of asset translating to hurdles in acquiring education, given that India has consistently underinvested in basic education for the masses, and as a result, the historically determined inequality in the social spheres get replicated in even the economic sphere as well, or labor market, with the better paying jobs going more to the privileged groups who have had greater access to higher education. ठीक बात है. डेटा भी है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल 38.2% in 2021-22 of all the SC workers were casual, earning their livelihoods mostly out of hard manual labor. The corresponding proportion was 11.2% for the workers belonging to the other general category caste. This is according to the PLFS, that is Periodic Labor Force Survey data of 2021 and 22. Fine. So the persistence of inequalities has negatively impacted industrial and economic growth in India. Domestic demand has been lopsided, coming as it does largely from the upper income class, who constitute only a small, though substantial in absolute number, segment of the population. So this has slowed down the growth of manufacturing of high quality, mass consumption goods, including food products and garments, and entrepreneurship too has emerged from a narrow social base. ठीक है, कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर में नहीं या सोशल स्फीयर में नहीं, बल्कि हमें जॉब मार्केट्स में भी देखने को मिली. ठीक है, प्रोडक्शन, क्योंकि जो रिच क्लास है, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनकी डिमांड जो है वो इतनी एक टाइम के बाद इतनी ज़्यादा नहीं रहती. दे ओनली डिमांड्स द लग्जरी गुड्स. सो कहीं ना कहीं जो मासेस हैं वो सफ़र कर रहे हैं इस वजह से. ठीक है कि बेसिक नेसेसिटी जो हमारी पॉपुलेशन की वो भी नहीं मिट पाई.
Second is, finally the conclusion is that reinstate the state support. कि आज भी सरकार या जो स्टेट है, सेंटर नेशन है, उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट की जरूरत है, उसको रीइंस्टेट करने की जरूरत है, जैसे हमने इनिशियली किया था. Looking forward, we need to have a clear recognition of what went wrong and where we got it right. With the ambitious development strategy India launched immediately after independence, the audacious attempt to build technological and industrial capabilities with generous state support was the correct thing to do. So he is saying कि जो भी audacious attempt जो सरकार ने उस टाइम पे लिया और attempt जो था in order to build this technological and industrial capabilities was with generous state support was not at all bad, but of course it was good somewhat, because later on we realize this dividend of this large scale investment. So the country must reinstate such efforts of it if it has to stand a chance in fast growing economic fields, be it semiconductors or biotechnology. Yes, these are the two sectors जहाँ पे बहुत ज़्यादा focus है आज के time में. After 1991, India abandoned planning for industrial growth, assuming mistakenly that there is no role for the industrial policy in a globalized economy. So he's criticizing this thing. It will be costly to continue with that error now at a time when both the United States and China are lavishing government support for their industries. So therefore, need of R is to support the industry in India even. At the same time, India must redouble efforts to make economic growth more inclusive, broad-based. Education, especially higher education, should be accessible to all, including the downtrodden and the dispossessed. India's mission to use technology to propel itself to a higher level of development is half on. Now, if the country's billion-strong masses acquire the social and the human capabilities required for upward mobility, that will be the equivalent of a lunar takeoff in economic progress. So, अब जरूरत क्या है कि हम इस पे फोकस करें कि जो countries, कि we are 140 crores nation, तो कहीं ना कहीं जो billion of plus population है, strong masses हैं, they need to acquire or they should be provided with the better skills, and human capabilities that are must for the upward mobility, and this will be somewhat equivalent of a lunar takeoff in economic progress. ठीक है, like Chandrayaan mission. So lunar takeoff, this would be in economic domain. Fine. So very good article, very insightful article. You can see. Do read and revise this. A light bulb moment for the Indian fan market. So यहाँ पे जो light bulb की बात क्यों कर रहे हैं, LED की बात करें कि initially क्या था कि सरकार ने 2015 में उजाला करके एक स्कीम लॉन्च की. Remember we have two schemes, उज्ज्वला and उजाला. उज्ज्वला is related to the LPG distribution. उजाला is related to उजाला, of course. So उजाला is related to the bulb, the LED revolution. ठीक है. So initially LEDs जो थे वो बहुत महंगे थे, 400 के रेंज में आते थे. इस प्रोग्राम की वजह से उनकी जो कॉस्ट थी वो 400 से 90 रुपए के आसपास हो गई. ठीक है. सो ये सब कुछ देखते हुए अब जरूरी है कि फैन जो है कि इंडिया जो है फैन मार्केट में स्पेशली इसी तरह का कुछ करने की जरूरत है. उसके लिए उन्होंने 4 सॉल्यूशंस दिए हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल द बैकग्राउंडर. सो ऑफ कोर्स you can see the ceiling fan market is undergoing a churn too, driven by policy imperatives and regulation change, but the fan market must learn from the successes and hiccups of the light emitting diode, that is LED के full form है bulb story. जैसा कि इंडिया की जो गोल है of reducing harmful emissions per unit of GDP by 45% by 2030 with the base year of 2005, it requires a sharp reduction in the energy consumed for economic activity. ठीक है. And ceiling fan, which used by around 90% of the households as per the Q survey of 2020, represents about a quarter of household electricity consumption. The India Cooling Action Plan projects that the number of fans in use in India could grow to 1 billion by 2038 from now 500 million. ठीक है कि डबल हो सकती है यूज. ठीक है, 500 मिलियन से 1 बिलियन की यूज by 2038 हो सकती है, which consumes around 1/3 of the electricity at the domestic level. So इसलिए as income grows along with average temperature, जो demand for fans है वो भी बढ़ सकती है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और इनकम बढ़ रही है. ठीक है. सो स्टार रेटिंग प्रोग्राम क्या है, ये बी की है, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. ठीक है. स्टार रेटिंग में क्या है कि 1 स्टार 2 स्टार अप टू 5 स्टार, जितनी ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा एनर्जी सेविंग, उतनी एनर्जी एफिशिएंट आपकी जो अप्लायंस है वो है. ठीक है. जैसे आपने रेफ्रिजरेटर देखे हुए घरों में या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उस पर आजकल स्टार रेटिंग के साथ आता है. ठीक है. बट एक इशू इन्होंने अंडरलाइन किया कि जो स्टार रेटिंग के साथ इशू मेजर है वो ये कि
कहीं ना कहीं 5 स्टार जो फैंस हैं, द स्टार रेटिंग कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज टिपिकल अनरेटेड फैंस एंड नॉट अ स्मॉल बैरियर टू अडॉप्शन इन इंडियाज प्राइस सेंसिटिव मार्केट। ठीक है, कि जो गरीब तबका है, जो गांव लेवल पे बात करें, अगर आप 5 स्टार फैन की बात करो जिससे कि मोस्ट एफिशिएंट फैंस होंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेविंग, बट साथ में ये भी है कि उनकी कॉस्ट जो है वो नॉर्मल फैन से ऑलमोस्ट दुगनी होगी। तो क्या एक ऐसे लेवल पे सोच के देखो, गांव के लेवल पे क्या जनता जो है खरीद पाएगी? ठीक है, so this is one question they are putting, of course, बट इसके लिए एक EESL है, दैट इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसने आपने अगर ध्यान दिया होगा तो LED बल्ब ऑफ 9 वोट एंड ऑफ कोर्स इवन ट्यूब लाइट्स कुछ साल पहले 2015 के आसपास, नेक्स्ट अराउंड 2015 से 2018 तक 3 साल तक ऐसा चला था। तो समवट EESL ने उन पे लिखा भी होता था, जो लाइट ट्यूब आप देखोगे LED बल्ब EESL। तो इस एजेंसी ने, गवर्नमेंट की जो है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है ये। सो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की एक ओवर। सो इसमें क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं EESL ने, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, इसने डिस्ट्रीब्यूट की थी उस टाइम पे भी, ठीक है, दिस LED बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स, एंड उस वजह से 10 रुपए में 9 वोट के बल्ब्स मिलते थे। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी हमें इस डायरेक्शन में अच्छा काम किया गया। ठीक है, एंड काफ़ी सेविंग्स एनर्जी के फ्रंट पे हमें देखने को मिली। इसी तरह से EESL जो है प्लान कर रहा है कि अराउंड टू सेल 10 मिलियन 5 स्टार सेलिंग फैंस, एंड द प्रोग्राम होप्स टू ट्रांसफॉर्म द फैंस मार्केट मच लाइक इट डिड फॉर LED लैम्प्स अंडर द फेमस उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, दैट इज उज्ज्वला प्रोग्राम का फुल फॉर्म आपका ये है। ठीक है, तो उज्ज्वला प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए कि लॉन्च्ड इन 2015, helped reduce the price of LED lamps from 400 to 90 in a span of 3 to 4 years. ठीक है, but ceiling fans are more complex appliances than LEDs, and here are 4 measures for sustainable and beneficial transformation of the fans market. So what are these 4 measures or solutions? Number 1, maintain a technology agnostic policy. ठीक है, demand aggregation is most effective when single technology specification is procured in bulk. In the case of LEDs, it was the 9 watt white light LED bulb. सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म 9 वोट की बल्ब प्रोक्योर की गई थी एंड डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। बट फैंस के केस में क्या है कि हैव अ वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजी, ईच विद इट्स ओन ट्रेड ऑफ्स। ठीक है, एंड अ पॉलिसी दैट कवर्स मोर देन वन स्पेसिफिकेशन वुड बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन। ठीक है, फैंस में जो है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, सो हम जो एक्वायर करेंगे हमें ये ध्यान देना होगा कि हम डाइवर्सिटी को कवर करें। ठीक है, बिकॉज अ पॉलिसी दैट कवर्स मोर देन वन स्पेसिफिकेशन वुड बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव स्पेशली इन द लॉन्ग रन। ठीक है, सेकंड क्या सॉल्यूशन है या मेजर क्या है, दैट इज मैनेज द बैलेंस बिटवीन प्राइस रिडक्शन एंड क्वालिटी। ऐसा ना हो कि क्वालिटी के क्योंकि एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 2019 की एक स्टडी बताती है कि हाफ द LED ब्रांड्स वर नॉन कंप्लायंट विद द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द 2018, जो 15 से 18 के बीच में ये चला। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हमें प्राइस कम करने के चक्कर में क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वालिटी अगर ठीक होगी तो हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन के फ्रंट पे अगर हम मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दें तो हम अल्टीमेटली एक्सपोर्ट्स भी कर पाएंगे एंड बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, थर्ड इज फोस्टर हाई क्वालिटी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर हाई एफिशिएंसी फैंस। ठीक है, साथ में इंडिया ने 2021 में प्राइमरली एक्सपोर्ट भी किया है अबाउट 5 मिलियन फैंस टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नेपाल, घाना, श्रीलंका, सूडान, इराक। तो अगर क्वालिटी को हम इंटैक्ट रख पाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, तो हम साथ में अपनी डोमेस्टिक डिमांड को मीट करते करते हम एक्सपोर्ट्स भी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड फाइनल जो है दैट इज डेडिकेट रिसोर्सेज टू स्ट्रेंथनिंग द स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम। एटलीस्ट 30% ऑफ इंडिया सेलिंग फैंस मार्केट में बी अनऑर्गेनाइज्ड। तो कहीं ना कहीं हमें इसको फॉर्मल और मार्केट में लेकर के आना है, सो दैट कि अदरवाइज बिना जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसमें फिर भी चीपर जो फैंस होंगे उनकी सेल होती रहेगी एंड इनएफिशिएंट फैंस टू प्राइस सेंसिटिव और अनएज्यूमिंग कंज्यूमर्स इन द मेन टाइम। सो कहीं ना कहीं इससे जो सारा रेवोल्यूशन जो ये स्टेप्स है EESL की और जो सारी थिंकिंग है, पॉलिसी मेजर है, कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस होगी। सो फैंस आर अंडरगोइंग देयर फर्स्ट मेजर फेज डिसरप्शन इन डेकेड्स। Energy efficient fans can not only help the vulnerable population get access to critical service for coping with events of extreme heat with lower electricity bills, but also central to India's clean energy transition and can play a part in its economic growth. बिल्कुल ठीक बात है, अगर बेटर स्टार्स के होंगे, बेटर रेटिंग होंगे, एनर्जी एफिशिएंट फैंस होंगे, तो ऑफ कोर्स इंडिया की जो
एनर्जी ट्रांजिशन है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, उसमें काफ़ी मदद हमें मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट। तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पे जो है दैट इज अबाउट द ट्रैकिंग इंडियाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, हम ये सब बात कर चुके हैं, कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है अभी भी 6+ से ऊपर चल रही है, फॉलिंग रूपी है, फ्लक्चुएशन इन टैक्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड एन ऑप्रीहेंशन आउटलुक ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कल परसों भी हमने बात की थी कि जो क्रॉप के फ्रंट पे हमें रिडक्शन, इस बार एडीबी ने 1% पॉइंट से जो ग्रोथ है स्पेशली द फार्म आउटपुट और रिड्यूस कर दी है इसी वजह से, क्योंकि क्रॉप्स की जो लॉसेज हुई हैं, इंडियाज रिपोर्टेड ग्रोथ नैरेटिव में भी ओवर एम्बेलिश्ड। एक बात है कि कहीं ना कहीं ओवर एम्बिशियस टारगेट हो सकते हैं, ज़्यादा डेटा जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा सकता है, तो देयर आर डेटा फैक्ट्स में होते रहते हैं। तो Q1 डेटा कवरिंग द जीडीपी ग्रोथ रेट फ्रॉम अप्रैल टू जून ऑफ फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर 24 की बात करें, बोस्ट नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ 8% एंड रियल ग्रोथ रेट ऑफ 7.8%। ठीक है, तो नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ 8% एंड रियल ग्रोथ रेट ऑफ 7% की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द Q1 की डेटा की बात करें, दैट इज फ्रॉम अप्रैल में जून, अप्रैल टू जून। ठीक है, of this year's fiscal year. The government's tax revenue from direct taxes has weakened over the previous quarter, while the indirect tax revenue remained strong, indicating a K-shaped pattern. K-shaped की एक जो है ये ऊपर चलता जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने कोरोना के टाइम पे बात की थी कि अगर ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है तो जो अमीर तबका है वो काफ़ी उस टाइम पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो टॉप कुछ बिजनेस हाउसेज हैं उन्होंने बनाए उस टाइम पे कोविड के टाइम पे, और जो गरीब है वो ऑलरेडी बिलो पॉवर्टी लाइन चलता गया। ठीक है, direct and personal taxes should have grown closer to the nominal growth rate than it has currently. Narrowing revenue streams indicate forced austerity measures as the government intends to control the budget deficits and hence the interest rate. ठीक है, so कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का फोकस है वो फिजिकल डेफिसिट को भी कम करने पे है, साथ में इंटरेस्ट रेट को भी कम करने पे है। तो ऑफ कोर्स जो एक्सपेंडिचर के फ्रंट पे बात करें वहाँ पे हमें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल सकती है इंडिया के लेवल सरकार के लेवल पे, जिसको कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज अबाउट दिस Q1 फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट let us have a quick look at the miscellaneous facts, and here we have another Khalistani operative gunned down in Canada, not in India, remember. Okay, okay, further, Indian diplomats in Germany meet Ariha but parents denied access. Ariha Shah last month with baby, Ariha Shah, the 2-year-old child who has been taken into parental custody. हमने बात की थी पहले, एक मूवी भी इस पे आर्टिकल भी डिस्कस किया था, जैसे एक मिस बैनर्जी ऐसे करके कोई मूवी भी बनी थी नॉर्वे में, जो बंगाल की एक, वहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स से बच्चे को दूर कर दिया गया, शी इज़ जस्ट 2-year-old। ठीक है, तो कोशिश ये है कि जो हमारा काउंसलर है वहाँ पे, काउंसलर जनरल जो हैं और जो डिप्लोमेटिक मिशन है जर्मनी में, उसकी हेल्प लेकर के बच्ची को वापस इंडिया लाया जाए या पेरेंट्स के मिलाया जाए। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स इम्पोर्टेंट हियर, सो वी हैव पॉलिटिक्स ओनली हियर। चाइना, यूएस एंड इंडिया एब्सेंट एट यूएन's क्लाइमेट एम्बिशन समिट। जैसा कि हमने फ्रंट पेज पे देखा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो टॉप 3 नेशंस हैं, representatives from 34 states and 7 institutions were given the floor on the day of summit. All the G20 governments will be asked to commit to presenting by 2025 more ambitious economy-wide nationally determined contributions. सारी कंट्रीज ये बताती हैं, UNFCCC की सेक्रेटरीट को बताती हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स ग्रीन, क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, और कैसे हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। तो क्लाइमेट एक्शन समिट जो है वो कहाँ, इट टुक प्लेस इन ऑफ कोर्स द न्यूयॉर्क एज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, फाइन, एंड इट हैज बीन कंक्लूडेड फाइनली यस्टरडे ओनली। चाइना, यूएस एंड इंडिया की एब्सेंस हमें देखने को मिली है वहाँ पे, विच कलेक्टिवली ऑल दीज 3 कंट्रीज अकाउंट फॉर अबाउट 42% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड आर द टॉप 3 एमिटर्स इन दैट ऑर्डर। ठीक है,
सबसे ऊपर चाइना है, फिर यूएस एंड फिर इंडिया। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश नहीं गया, क्योंकि ये 3 एमिटर्स जो टॉप हैं और ये तीनों ही एब्सेंट थे इंक्लूडिंग इंडिया। फाइन। तो क्लाइमेट सॉल्यूशन क्या है? क्लाइमेट सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स सम व्हाट you can see the government committed to meet 50% of electricity power needs from the renewable non-fossil fuel energy sources, up from 40% committed at Paris agreement। तो somewhat इंडिया ने काफ़ी अच्छे अपने एनडीसीज में जो है वो टारगेट्स रखे हैं अपने लिए, एंड उस डायरेक्शन में हम अचीव भी करें टारगेट्स को। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने बात करी है और काम नहीं कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो एंड इट प्रॉमिस टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030। So our focus there is on climate solutions and our task is urgent. Humanity has opened the gates to hell, said by Mr. Guterres, that is UNGA Secretary General. ठीक है, and if nothing changes, we are heading towards a 2.8 degree Celsius temperature rise, towards a dangerous and unsustainable world। जैसा कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये प्रॉमिस की गई थी, ये निकल के आया था कि 1.5 से 2 डिग्री के बीच में हम जो राइजिंग टेम्परेचर है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, उसको हम रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो ये कह रहे हैं कि 2.8 डिग्री तक जो टेम्परेचर वो राइज कर सकती है अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया, एंड द हाई टाइम इज नाउ। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इज अ सीरियस मैटर। इसरो होपिंग टू वेक अप विक्रम एंड प्रज्ञान टुडे, इसकी हम बात कर चुके हैं फ्रंट पेज पे ही। ठीक है, पैनल सजेस्ट जीपीएस ट्रैकर्स टू रिड्यूस ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन्स। सो पार्लियामेंट्री कमेटी, ये आप यूज कर सकते हो जीएस2 में, ऑन होम अफेयर्स, इसने कहा है कि जीपीएस को ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू जो रिड्यूस ओवरक्राउडिंग प्रिजन्स जो है इंडिया में, उसको हम कम कर सकते हैं उनकी लोड। ठीक है, तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी कैन बी लेवरेज्ड फॉर सच पर्पसेस। देन व्हाट अबाउट see what's news from the world page। so of course इलेक्शन होने वाले हैं पाकिस्तान में जनवरी 2024 में, and what else important, अर्मेनिया अजरबैजान में चली रही है अभी बात। अर्मेनिया डिक्राइज अजरबैजान वायलेंस। चाइना रशिया मस्ट डीपन कोऑपरेशन। व्लादिमीर पुतिन जो है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, वो विजिट करने वाले हैं ठीक नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली इन चाइना। ओके सो अभी 2 दिन पहले एक ट्रिब्यून में एक खबर छपी थी कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो सेविंग्स रेट है, हाउस होल्ड सेविंग रेट है, वो कम हुई है, एंड डेट बर्डन जो है बढ़ता जा रहा है। उसको डिनाई करते हुए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने ये कहा है कि इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सेविंग रेट। क्यों कम हुई है? इट इज बिकॉज ऑफ द परचेजेज ऑफ होम्स एंड व्हीकल्स हैव डेंटेड द सेविंग्स, नॉट डिस्ट्रेस। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इकोनॉमी में डिस्ट्रेस है, बट इसलिए क्योंकि लोग अब घर और गाड़ियां खरीद रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहा है मिनिस्ट्री ने। ट्राई ने रिलीज किया, आउटलाइन की है ब्रॉडकास्ट पॉलिसी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। Finally, we have learned the sports page. Before we stop for the day, let us have a quick look at the questions based on our today's discussion. So here are the 2 questions. First is, consider the following statement, that is the Statue of Oneness is located in Madhya Pradesh. This gigantic statue of 108 feet is of the Adi Guru Shankaracharya, and third statement is Shankaracharya consolidated the doctrine of Dvaita Vedanta। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस। द सेकंड क्वेश्चन जो है, दैट इज गिविंग इंडियाज masses the social and the human capabilities required for upward mobility will be the equivalent of a lunar takeoff in economic progress। You need to comment in 250 words for a 15-mark question. Fine. So that's it as far as today's Hindu analysis is concerned. If you have any query, anything, you can put the same in the comment section. Until then, take care, keep revising, and stay tuned for tomorrow's Hindu analysis. Thank you.